Well, you're watching the Cleanathon, and I have to tell you the number of schools that are organizing cleanups today is mind-boggling. We're trying to go to as many of them as we possibly can. They're sending us pictures, organizing Cleanathon. But Mr. Bachchan, let's just jog down memory lane a little bit for you. Yeah. And here's a school that we are going to, a number of children there with a special message for you. They want to talk to you. Your old school, sir, Sherwood College. Sandhya is there right now and is organizing a massive cleanup drive there. Sandhya, the kids out there must be really delighted to have Mr. Bachchan with them, sir. Anything you want to say to the kids there before they start asking you questions? This is a complete surprise for me, and thank you so much for being in Sherwood. I haven't been there in years, but yes, it'll be wonderful to see what you're doing there. So can we just have some visuals of that? Sandhya, hi. Not sure whether you can hear us. Mr. Bachchan was just wanting to talk to the kids if they have any questions for him or any comments here. Yes, totally. Totally. Talking about Sherwood College, Vikram, Mr. Bachchan is associated to the school, and that is the reason, one of the reason the kids are assembled over here. You can see they are with us, and they are ready with their questions, with their answers, and they want to interact with Mr. Bachchan and talk about his school days and what all cleanliness drive were there when he was a part of the college. So we would like to start with Angad. Hello, good afternoon, sir, from the entire Sherwood family. So I, Angad, wanted to ask you a question that, like, these days in Sherwood we have labor quota. It's basically like all the students, all the student body, they come, they clean the campus and other areas. So did you have such kind of thing when you were in Sherwood? No, I'm afraid not. We never had any kind of curriculum where we were asked to clean up, but we used to have inspection, and I'm sure that you have it as well. But every morning we used to have a morning parade, and there was an inspection, and there was inspection of the dormitories. So you had to keep your bed clean, your almari clean, your toiletry, everything should be in place, and your shoes polished, and your blazer and your tie in proper order. These were indications to us that, you know, there has to be a certain discipline as far as cleanliness is concerned, and we followed it diligently. And there were marks that were given for cockhouse, which you know what that means, and we always used to vie with the other houses to be able to win that cup. So yes, it is something that has always been ingrained in us from the time when we were there in the 50s. But I'm happy to see that, you know, it's become, wow, that's not me, that's Abhishek. Okay. Okay, so, but I'm happy to see that, you know, these kind of practices are being followed in Sherwood, and all of you are following it. Keep the school clean, and wish you all the best. And beat SEM to it, St. Joseph. Right. That's our rival school. We'll try and take some more questions. Also, I would like to introduce Approve to you, Mr. Bachchan. He has penned down certain lines, and he would also want to recite those lines and ask a question. Apur. Good afternoon, sir. Before I proceed to my question, मैं आपसे जो एक कविता स्वच्छ भारत अभियान पर लिखी है उसका एक अंश आप तक पहुंचाना चाहता हूं एनडीटीवी के माध्यम से, हिंदुस्तान तक, आप तक अगर पहुंचे तो शायद इसी में आपको मेरा प्रश्न मिलेगा। हर फूल से, हर कली से, निवेदन मेरा गली गली से, डाल डाल से, पात पात से, हर मजहब से, हर जात से, कल कल करते नदी नहर से, गांव गांव से, शहर शहर से। और निवेदन क्या है अब ये आप देखें, बस वही सुने मुझको जिनके अंदर स्वाभिमान है, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान है, क्योंकि मत भूलो मंदिर मस्जिद गिरजा हिंदुस्तान है, यही तो हम सब के लिए यारों हमारा अभिमान है। तो क्या हज या तीर्थ स्थल पर कूड़ा फूंक के आते हो या फिर अपने पूजा घर में पान थूक के आते हो? महोदय, ये जो बातें आज हमारे देश में हो रही हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं, उसके लिए जो अंतिम बात मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, जो अंश है वो आप तक मैं पहुंचाऊं, शायद आप मेरा साथ देंगे। क्योंकि हम जो हिंदुस्तान में कर रहे हैं उस पर जो मैं लिख सका मैंने लिखा। यदि निकले सफाई करने संकल्प कड़ा माने हम, कचरा उठाने की शर्मिंदगी से देश बड़ा माने हम।
निकल पड़ा था डांडी तक जो वापस वही उमंग चले, गली गली से बच्चा बच्चा हाथ मिलाकर संग चले, साफ हिंद की चाह में हर सफे पर कलम चले, साफ हिंद की चाह में हर सफे पर कलम चले, और भारत स्वच्छ बनाने हेतु कदम मिलाकर हम चलें, भारत स्वच्छ बनाने हेतु कदम मिलाकर हम चलें, दिखला दें अब दुनिया को कि भारत आशावादी है, हर दिल में अमर तिरंगा, धड़कन में महात्मा गांधी है, तो नालियों की गोद से मां गंगा के प्रवाह तक स्वच्छ भारत अभियान चले, उठा के झाड़ू हाथ में पूरा हिंदुस्तान चले। अब जो सवाल आपसे पूछना है, as Dr. Kalam in one of his speeches had mentioned that we Indians, when we go out to Bangkok, when we go out to Chicago, when we go out to Singapore, we do not litter around. We don't spit on the streets. We don't spit on the roads. But when we come back to our own nation, then why do these things seem to change? जिस गांधी की मैंने बात करी जो हमारे दिल में जिंदा हैं, क्योंकि वो ना सोना था ना चांदी था, ना तूफान था ना आंधी था, बिना एक चांटा मारे देश वापस ले लिया, भारत के उस सूरज का नाम महात्मा गांधी। क्या बात। तो उस गांधी को वो जो जीवित हमारे दिल में होना चाहिए, जब हम अपने देश में वापस आ जाते हैं, why does he seem to die in our own country? That's the question, sir. Thank you so much. My goodness, this is unbelievable. Suddenly, I feel a great amount of pride for being from the same school that you are. Thank you so much. This is incredible. कहाँ से आपने सीखी ये भाषा, कहाँ से आपके अंदर ये आत्मविश्वास आया, हम एकदम स्तब्ध हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और जितने भी आपके साथ लोग जुड़े हैं उन सबको मेरी ओर से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। इस कविता को आप हमें भेजिए, हम इस कविता का प्रचार करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि एनडीटीवी ने इसका एक वीडियो बनाया होगा। आप ये वीडियो भी हमें भेजिए, मैं इसको अपने जितने भी सोशल मीडिया उस सब पे डालना चाहूँगा, क्योंकि यह न केवल शेरवुड कॉलेज के एक विद्यार्थी की एक आराधना है या एक सपना है, बल्कि मैं समझता हूं कि ये प्रत्येक भारतवासी के लिए एक आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित जी, उन्होंने आपसे एक सवाल भी पूछा, और इसके साथ मैं भी एक सवाल जोड़ना चाहूँगा। जी, जी। जब आप स्कूल में थे, ऐसी कविता आपने कभी नहीं, इस तरह की कविता ना हमने कभी लिखी न पढ़ी, और पढ़ी मुझे तो आपने आपके पिताजी नहीं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप इस तरह से वहाँ पर इतने आत्मविश्वास के साथ ये आपने लिखा है। मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, और मैं शेरवुड कॉलेज को और जितने भी विद्यार्थी हैं और जो भी वहाँ पर आपकी शिक्षा देते हैं आपको, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आपको सुन करके हमें बड़ा गर्व हो रहा है। हमने इतना नहीं किया जितना आपने आज कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अमित जी, इनका जो सवाल था कि ये क्यों है कि वही हिंदुस्तानी जो जब विलायत जाते हैं तो कभी कचरा नहीं फेंकेंगे, गंद नहीं फैलाएंगे, और घर आके अपने ही घर को में पे गंदगी फैलाने में कतराते नहीं है। देखिए, इसका सही उत्तर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप कोई स्वच्छ जगह देखते हैं तो आप डरते हैं उस जगह को गंदा करने के लिए। तो अगर हम स्वच्छ जगह देखेंगे, साफ सुथरी जगह देखेंगे, तो हम भी कतराएंगे कि यार इसको गंदा नहीं करना चाहिए। किसी भी आप इमारत को ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं, चलिए आप किसी होटल में गए, आप लॉबी में गए, आपको लगता है कि बड़ी 5 स्टार होटल समझ लीजिए, यहाँ पर ताजमहल है, ये ओबेरॉय है, तरह तरह के होटल हैं। आप देखेंगे कि वहाँ लॉबी में गंदगी नहीं है, साफ़ सुथरा रहता है। वहाँ पर आप थूकेंगे नहीं, वहाँ पर आप कुछ कचरा नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये जगह एक स्वच्छ और साफ जगह है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी अपनी जगह को साफ़ सुथरा रखें, जिस तरह की सिंगापुर में बात करते हैं और अलग देशों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी जगह को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम भी कतराएंगे उसे गंदा करने। यही उत्तर है मेरे पास। और आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर अमित जी आप देखेंगे तो जैसे कि अगर मेट्रो आता है, मेट्रो साफ सुथरा है, तो वहाँ लोग उतनी गंदगी नहीं फैलाते हैं, थूकते नहीं है वहाँ मेट्रो पे। तो इसीलिए अगर भारत को स्वच्छ रखेंगे तो एक बार ये एक पॉजिटिव सर्कल हो जाता है, वर्चुअल साइकिल बन जाता है। आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं ना, घर के अंदर आप थूकेंगे क्या पान? नहीं, कोई थूकेगा पान? बाहर जाकर क्यों थूकते हैं आप? क्योंकि आपका घर स्वच्छ है, उसे आप साफ रखना चाहते हैं, इसलिए आप नहीं थूकते हैं। इसी तरह आपकी विचारधारा को बदलना पड़ेगा कि बाहर भी आपका यही घर है, ये आपका देश है, ये हमारी धरती है, हमारी ज़मीन है, इसको हमें स्वच्छ रखना है।
बिल्कुल अमित जी आपने जो सही कहा. Santya, let me see if we can take one more comment from Sherwood, and then I want to go across to Gargi, who's there in Varanasi, and that's a third iconic location we're going to take up. But any other comments or questions from Sherwood? One last comment or question we can take. Yes. Yes, Vikram. There are more students who want to ask questions to Mr. Bachchan, but we'll go to one question where they want to talk about the stricter laws, if we can have one, and the importance of that. So, she would like to ask a question. Good afternoon, sir. I'm Akshata Garima. My question to you is that would more stricter laws and jurisdictions and punishments will help implementation of more stricter laws will help and make these drives even more successful? Yeah, I think this is a very pertinent question. I feel that first we must have some kind of a campaign where we inculcate this behavior pattern in all of us, to have a better civic sense. What we do, how we behave, how we obey traffic laws, what we do in our homes, what we do towards cleanliness in our streets. And if that fails, then yes, we should devise some kind of punishment or some kind of law which takes care of all this. It's true for many, many activities, unfortunately. We had a very lax kind of an attitude towards, unfortunately, for rape victims, for women that have suffered from acid attacks. But one wrong incident, one public uprising forced the government to change the law. And I think if we can have similar campaigns within the country towards cleanliness, and if it is not done properly and effectively, then yes, I would not mind some kind of law coming in where there is punishment for it also. All right, I think it's a clear answer you've got to your question. Thank you so much, and many thanks to everybody from Sherwood College who joined us for that.